हेलो सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। हम लोग इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इन दिस वी वुड रीड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस पे हम लोग को फोकस करना है। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। पर उसके पहले थोड़ा बहुत देखना होता है, राइट, दोज एटॉमिक मॉडल्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो कभी कभी थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी एनीवे। यू हैव टू रीड एवरी चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट गोज विदाउट सेइंग। बट इस वीडियो में दैट इज नॉट द फोकस। वी वुड जस्ट स्किम थ्रू दैट। मैंने नोट्स में दे दिया है ऑलरेडी, बट आवर मेन फोकस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो वी वुड रीड दैट। मैं जस्ट इसको जल्दी से बोल देता हूँ। सो इंट्रोडक्शन, अगेन कैथोड रे EYM आपको एक बार देख लेना होगा। EYM रीड इट, इसका यूनिट ध्यान में रखना, राइट। 1.76 10 to the power 11, just read that. Anode ray, same thing, just read the notes through it. एटॉमिक मॉडल, जॉन डेल्टन ने क्या बोला था, जे थॉमसन के प्लम बडिंग मॉडल, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एंड इट बेसिकली इज दैट he said that the entire atom is a sphere of uniform positivity, and in that electrons are embedded. That is that. Just take in a Rutherford alpha particle gold foil experiment. Sometimes questions come. What happened is, when he projected alpha particle into the atom, most of them passed undeflected, right? So that says that most of the atom is empty. Some deflected back, so there is certain mass that is concentrated, and some were some, as in 1 in 20,000, ये number थोड़ा याद कर लेना, bounced back 180 degree. It is given in NCERT, that's why, and यहाँ से question भी आया हुआ है, bounced back 180 degree. So all this gave some certain conclusion from all this. What is that? That atom has a nuclear center जहाँ पे सारा mass concentrated है. That is why only few particles are deflected. Number of electrons is equal to number of protons. That is why atom is electrically neutral. And he also gave atomic radius is 10 to the power, इस सामने में कोई वैल्यू होगा, but it is 10 to the power minus 10. That is last में यही रहेगा. You have to remember this, right? 10 to the power minus 15 is the nuclear radius. So as you can see, atomic radius is a lot bigger than the nuclear radius. Almost 1 लाख का इसमें अंतर है. Almost क्या, 1 लाख का अंतर है. 1 lakh times the nuclear radius is smaller. इसमें आप फिजिक्स में और भी सब कुछ पढ़ोगे, राइट? दैट ही ऑल्सो गिव R इज इक्वल टू A1 to the power 3. मास नंबर से 1/3 होगा वहाँ पे. मास नंबर से इसका रिलेशन दिया था उन्होंने. सो दैट यू हैव टू रीड. यहाँ पे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है. नाउ इट हैड सर्टेन ड्रॉबैक्स, यू हैव टू रीड इट. वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ. दैट इज वन. देन does not describe arrangement of atoms, does not describe spectral lines. Now this is something that you need to do. Read, ये याद करना होता है, सबको याद ही होता है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, सेम प्रोटॉन का तो सेम ही होता है, मास क्या होता है. ऑल दोस थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये एनसीईआरटी का ही है, देख लेना आप. नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना होगा. व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? बेसिकली ऑल द रेडिएंट एनर्जीज, लेट्स से हीट हो गया, लाइट हो गया, एक्सरे हो गया. Maxwell said that they travel with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Obviously you know that. And they travel in waveform. Now when they travel in waveform, ये हो गई wave. अब wave में क्या क्या होता है? This, from one peak to the other peak, this is your wavelength, correct? This height is your amplitude, A, correct? Now there are certain other things. What is frequency? Frequency is the number of times the wave passes from one point in a second, correct? That is your frequency. Then there is velocity. C is clear because we are talking about electromagnetic radiation, and ये C के light के speed पे travel करता है. That is why C. And wave number. Wave number is 1 by lambda, 1 upon wavelength. That is simply wave number. इन सब के units आपको पता होने चाहिए, right? And how you transfer one unit to other, like Armstrong को आप picometer में कैसे करोगे, वो सब आपको पता होना चाहिए. Another thing, electromagnetic waves do not require any medium for propagation. Now coming to this part, what is this? That electromagnetic waves have electron, मतलब आपका electric है, और magnetic, right? तो magnetic field भी होगा उसमें. We know that electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and they are also perpendicular to the direction of propagation of the wave. What does that mean? Let's say अगर x axis पे आपका electric field है, y एक्सिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होगा, दैट वुड बी इन z एक्सिस. सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में, लेकिन करना पड़ता है, क्वेश्चंस आते हैं, इवन फिजिक्स में भी आते हैं. सो देयर इज अ इजी rhyme you can say that you can remember. Gamma x UV rays, V दो बार because this UV and V for visible, and infra micro radio waves. V को obviously you can increase it, waveguide आ जाएगा यहाँ पे. So what happens when you go from this direction to this direction? बहुत confusion होता है, wavelength increases or decreases. Now you know that when you in waveguide, when you go from V to R, wavelength increases, right? तो इस direction में wavelength will increase, and as wavelength increases, what will happen? Frequency decreases because wavelength and frequency are inversely proportional to each other, correct? जितना ज़्यादा wavelength होगा, frequency उतना कम होगा. Now the whole diagram is here, NCERT से ही लिया हुआ है, so you can see gamma x UV, the UV ray and then visible rays, so V दो बार, infra, micro, then radio waves are two, there are short radio waves and long radio waves, so you have to remember that. Simply when going from this direction to this direction, your wavelength increases and frequency decreases. All you need to remember is this much. Now coming to photoelectric effect, which is the main part of the video. ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहले थोड़ा पढ़ना होगा हम लोगों को, क्योंकि इससे एक दो फॉर्मूले आते हैं जो हम लोग बाद में यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? आपने देखा होगा कभी, अगर लेट्स से व्हेन यू आर हीटिंग अ मेटल, तो वो कलर चेंज करता है, राइट? It becomes red, then it becomes, finally it becomes purple. So all this thing that happens, the change of color, why does it happen? It is because it is emitting some radiation, correct? That you are able to see, that is why you are able to see that the color is changing. So वो radiation का अगर color change हो रहा है, that means वो radiation का wavelength बार बार change हो रहा है, right? So Planck basically suggested that energy is being released in small quantas, right? Which we call photons, correct? And उसने कुछ formulas दिए. He found out that energy is directly proportional to frequency, and proportionality हटाने के लिए हमको constant देना होता है. So he gave a constant which we call Planck's constant, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, नहीं है तो याद कर लेना. H is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. This you need to remember. बहुत सारे याद ही हो जाएगा, थोड़े से क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा. Anyway, so we know that frequency is inversely proportional to lambda, correct? And inversely proportional कैसे करते हैं? Frequency is equal to c by lambda. We know that, right? तो अगर हम लोग frequency को यहाँ पे डालते हैं, then we would get E is equal to hc by lambda. Now Planck said that energy is being released in quantum, right? Energy is quantized. तो कितने quanta energy release हो रही है? How many photons are being released? That this would be the energy of one photon, right? So how many photons are being released? So total energy would be is equal to n hc by lambda, correct? ये formula काम आने वाला है. So let's do a question on that. So see this question. A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Pause the video for 2 seconds. Try to do it yourself. नहीं होता है तो देख लेना. Now there are 4 options. वो हम लोग बाद में देखेंगे. What is given in the question? Let's say आपको दिया power is 100 watt. What is power? Power is energy per unit time, correct? So it is watt. इसको हम लिख सकते हैं 100 जूल से per second, correct? क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करना है photons for how many times per second, correct? तो यहाँ पे second का वैल्यू तो 1 ही है. So we know that energy is 100 joule. Energy मिल गया. Now we have been given wavelength 400 nanometer. Energy जूल में इसको कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट जूल है, इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, which is meter. So it would be 400 into 10 to the power minus 9 meter, which is 4 into 10 to the power minus 7, correct? अब हम लोग को सिंपली नंबर ऑफ फोटॉन्स फाउंड आउट करना है, तो उस फॉर्मूले में बैठा दो, which is E is equal to n hc by lambda. So we need to know n is equal to E lambda by hc, correct? अभी सबके सिर्फ वैल्यूज बैठाने हैं, नथिंग एल्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. So n is equal to E, which you know is 100 joule,
let's write it 10 to the power 2. Lambda is 4 into 10 to the power minus 7. Now HC, H is 6.626 into 10 to the power minus 34, C is 3 into 10 to the power 8. पर ये आपको इसका जो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है, जस्ट रिमेंबर दैट इट कम्स क्लोज टू 20 into 10 to the power minus 26. ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है, बट हम लोग को ऑप्शंस दिए रहते हैं, राइट? सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट क्लोज कौन सी वैल्यू है. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. कम्स आउट टू बी 5. यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा -5 प्लस 26, ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर जाके प्लस 26 हो जाएगा. 5 हटाएंगे तो बचेगा क्या? 21. सो वी गेट 1/5 into 10 to the power 21 photons per second. Now this would come out to be, एक 10 मल्टीप्लाई कर दो इधर, और जस्ट do this, it would come out to be 0.2 into 10 to the power minus 10 to the power 21, which is 2 into 10 to the power 20 per second. अब देख लेते हैं इससे क्लोज क्या है. So see this one, option A 012 10 to the power 20, इस पे हम लोग को फोकस करना है. So this is the answer. So now coming to the main topic, which is photoelectric effect. Photoelectric effect, as the name suggests, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक कुछ इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है. इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वी नो कुछ ऐसा होगा कि लाइट आएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा. दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पुटिंग इट वेरी सिंपली. तो लेट्स से देयर इज अ मेटल सरफेस, राइट? उस पे एक मोनोक्रोमैटिक लाइट स्ट्राइक की. अगर कौन सी ऐसी कंडीशंस है व्हेन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन? नाउ सी, अगर मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are bound by some force, right? नहीं तो ऐसे ही घूमने निकल जाते हो. Why do they need a light? So to make them go from here, to leave the metal and go somewhere else, you need to give it a minimum of energy. That would be something, right? So वो energy जो enough होती है to overcome the bounding nature of the electron, that we call work function of that metal, right? इस work function से ऊपर की energy देंगे, तब इससे ज़्यादा वर्क हमको करना पड़ेगा, देन हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ से निकालने के लिए. नाउ वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. हम लोगों ने ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था. सो दिस वर्क डन शुड बी एच न्यू. ये हम लोगों ने बाद में पढ़ा था कि प्लैंक ने अपना कांस्टेंट देके उसको ठीक किया था. नाउ शुड इट बी एच न्यू और एच न्यू नॉट? बिकॉज वर्क डन इज नॉट, सो एच न्यू नॉट, राइट? नाउ दिस electron, this photon that is coming in, that is light, sorry, not photon, that is coming in, it should have some energy. So let's say this energy is equal to h nu. जो भी इस light की frequency होगी, that would be the energy. So what would be the kinetic energy of this electron that is leaving the metal? What would be the kinetic energy of this? Should be this energy जो आई है बाहर से, प्लस दिस एनर्जी जो मेटल को हमको देनी पड़ी है टू ओवरकम दिस फोर्स, उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे, दैट वुड बी योर काइनेटिक एनर्जी दैट वी नीड. सो लेट्स से E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और यू कैन से एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट? नाउ E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट? बिकॉज वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट. सो इसी से होगा जनरल क्वेश्चन. एंड दिस E, अगर कभी वेलोसिटी पूछ लिया इलेक्ट्रॉन का, so you know kinetic energy is equal to half mv square, right? Ve, because it's the velocity of electrons, so you can also write it as half mve square is equal to h nu minus h nu naught. So this is your complete formula, half mve square h nu minus h nu naught. Another thing that you need to know, ये v naught जो यहाँ पे है, the frequency, it is called threshold frequency. Threshold frequency. What do I mean by that? कि मतलब जो लाइट यहाँ से स्ट्राइक कर रही है, it needs to have minimum of this frequency. Actually, it needs to have a frequency more than this for electron to be emitted. Correct? Why more than this? क्योंकि अगर ये exactly इतना होगा, h v naught E is equal to 0 हो जाएगा, मतलब उसका velocity 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. That is why h nu needs to be greater than h naught for electrons to be emitted. So this is it from this video. थोड़ा लंबा हो गया because of the introduction part and everything. Otherwise, we would have done questions in this video itself.
पर बिकॉज इट हैज़ बिकम अ बिट लॉन्गर, तो इसलिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे क्वेश्चंस के. सो जॉइन मी फॉर दैट वीडियो. थैंक यू.